Hello, 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 test. Hello. Hello, hello. Good morning, everyone. I request all to kindly take your seats. We are about to start the program. I request everyone to keep your phones on silent mode, please. Once again, I request all to keep your phones on silent mode, please.
दीपज्योति नमोस्तुते। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत I request तुझसे Kiran Bedi ma'am, हर Dr. शब्द Mittal to तेरा kindly light the lamp. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। On behalf of IILM University, I extend a very warm welcome to all respected dignitaries, guests, and delegates. I request Sujata Ma'am, Vice Chancellor, IILM University, to deliver the inaugural address. एक बार मैं आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। Good morning, everyone. So, Honorable former Lieutenant Governor Kiran Bedi ji, National Secretary Shiksha, Sanskriti, Utthan, Nyas, Sri Atul Kothari ji, Chancellor IILM Dr. S.Y. Qureshi, AIU President Professor G.D. Sharma, AIU General Secretary Pankaj Mittal ji, Convener Mahila Sanskriti Utthan Nyas, Ms. Shobha, distinguished guests and esteemed colleagues. On behalf of the IILM University, I extend a very warm welcome to each one of you for the first National Women's Conference on promoting women leadership in higher education. It is a privilege and true honor to stand here as host the first Women Vice Chancellors Conference. This occasion holds an immense significance not just for our university, but for the entire academic community and the cause of gender equality in higher education. It demonstrates our collective commitment towards fostering inclusivity, diversity, equality within the academic landscape.
I would like to express my deepest gratitude to all the Vice Chancellors who have joined us from various universities and institutions. Your presence here is a testament to your remarkable leadership, vision, and dedication to advancing education. All of you are playing an instrumental role in shaping the academic landscape of our country and inspiring countless individuals to pursue knowledge and excellence. My presence at this August gathering today is a testimony that IILM, under the guidance of our chairperson, Mrs. Malvika Rai and Ms. Aarti Rai, have nurtured and groomed women over the years. They became competent to hold positions of responsibility in the IILM hierarchy. I am proud to inform the learned gathering that IILM has been a torchbearer to promoting women leadership in the education sector over the years. As we embark on this transformative journey, let us reflect on the progress we have made so far. Higher education plays a vital role in shaping the leaders and change makers of tomorrow. It is a platform that has the power to mold minds and ignite passions. But for too long, it has been marred by gender disparities, limiting the opportunities available to women and their potential. Women have put in tremendous hard work to overcome the countless barriers to rise to positions of influence in academia. Today, we gather here not only to acknowledge these disparities, but also to map a course towards rectifying them. The role of women Vice Chancellors or leaders in higher education is particularly critical in driving this change. As agents of transformation, we have the power to shape policies, advocate for inclusivity, and challenge the status quo. We must lead by example, creating pathways for women to rise to the leadership positions and fostering a culture that celebrates their achievements. I conclude by extending my deepest gratitude to AIU General Secretary Dr. Pankaj Mittalji and Sri Atul Kothari-ji for giving us this opportunity to host the prestigious conference of IILM and to call all Vice Chancellors, speakers for, Kothari-ji for giving me this opportunity to host this prestigious conference, and also my gratitude to all the Vice Chancellors, speakers, attendees, and organizers of this conference. Your presence today exhibits your commitment towards championing women leadership in higher education. Today, let's us create a path towards a future where women's voice are heard, their contribution recognized, and their leadership celebrated. Once again, thank you, and looking forward for effective outcomes after these 2 days conference. Once again, thank you. I would like to call our Chancellor, Dr. S.Y. Qureshi, to say a few words. Thank you very much. I welcome all the guests today and all the panelists to this very, very important conference. I'm not aware whether such a thing has happened before. My association with AIU is very old. I was Joint Secretary, Youth Affairs and Sport in the Ministry of HRD, 91 to 97, 92 to 97. And we were financing all the youth festivals in the universities. And I was visiting AIU very regularly. Secretary General at that time was Mr. Dr. K.B. Pawar, I remember, from Pune. We were good friends. And secondly, today the chief guest, Samriti Irani ji, who could not come, is Minister for Women and Child Development. My career in civil service in Delhi began with that ministry. In fact, initially it was
Ministry of Social Welfare. And it was in my time that this ministry was created, and Ministry of Social Welfare was split into two ministries or two departments, welfare and women and child development. In fact, even the Namkaran of this department was done by me, and we were at a dilemma. Women and child development, singular and plural. So we were wondering how to combine, but we could not find women and children development did not sound good. And we had a secretary who was educated in Oxford, and his English was good, and he said, it's all right, women and child development. To me, grammatically, it's a wrong construct, but it has stayed on. My association with Kiran, I'm authorized to call her Kiran for two reasons. She is a very old friend, and I'm 1 year her senior, and she knows the seniority matters all through your life. My first introduction to her was in the Academy of Administration when she was under training. I was under training in the field, having done 1 year, but I used to play in a rock band. And the director at that time, Mr. D.D. Sathe, invited me to the academy to play. And somebody from the audience was whistling. So the director came up on the stage later, and he apologized. I'm very sorry, we have a very naughty girl in this batch this year, the first woman IPS officer, Kiran, who was doing the whistling. So he said, yes, sir, for a musician, these cat whistles are actually our tonic. Nutrition, so therefore, and that is when we first met. Later on, I was in charge in this Social Welfare Ministry of Drug Abuse Awareness, where she was doing very active work in the police, and that is when we got to know each other even more. And of course, then we have been lifelong friends. Now, let me just deal with the technology. Three things relating to the subject of this conference. Now, a country's development status is known by the conditions of its women and children. And India has a lot to do in this respect. We rank 132 on Gender Development Index, 127 on the Gender Inequality Index, and 143 in women parliamentary representation. Now we have to be concerned, we have to do something about it, and we can if we decide, we make it a goal that we have to improve this. Now to me it is a paradox. We see every year after the examination, girls are doing better than the boys in every exam, year after year for the last decade. But where do they stop? They do well in school, they do well in college, but at the top positions, we don't find women. These days, what is circulating is 25 Indian CEOs of the top multinationals in USA, top Indian CEOs of American companies, but all are men. Earlier, there used to be Indra Nooyi, the woman, but what happens? What is it? There's something which discriminates against them, and it doesn't allow them to go to the top. Whereas Indra Nooyi was one of the best CEOs they ever had. But then why not others? They have excelled themselves in every field: education, medicine, aviation, science and technology. We have the highest number of pilots women pilots in the country. Our Kalpana Chawla went to space. Sports, girls bring more medals than men. And in politics also women are doing well, but with their very small numbers. Now, we had the first woman defense minister in the current regime, Nirmala Sitharaman. She also became the first woman finance minister. Mrs. Irani, I believe, if I remember right, she was the first HRD woman minister. So they are all making a mark. But even in universities, I used to attend every year the annual conference of Association of Universities and Vice Chancellors, because I was also head of the NSS program, which is operating in almost every university.
We were at that time campaigning for integration of NSS into main curriculum. And I remember by the time I left, 33 universities had adopted. I don't know what is the current status. But what is a matter of concern for me, that out of 1,000 plus universities, there are only 70 plus women vice chancellors. There should have been 300, 400, if not 500. But in any case, this figure is better than what it was 2 years ago. There were only 50. I was only reading yesterday on Google that in Ahmedabad there was a conference 2 years ago, then there were 50. Now there are 70 plus. Now, girls doing so well, but then there is something which comes in the way. My gender sensitization began when I was in WCD, Women and Child Development. Because although I was looking after child development, and which is Women and Children's program, but then there was a women's division where I used to hear lots of issues which sensitized me, and my PhD is in Women and Child Development. So that became my lifelong sensitivity, and Kiranji, I have used it to great advantage wherever I have gone. Even I was once a additional secretary and financial advisor in the Ministry of Steel, if you please. I was always in social sector. So what to do? I got Nida Fadli to write a poem for me, Beti, about the plight of girls, and I got the Pinal Masani to sing it. And I sent her to all the steel plants to give a live performance, because thinking that there will be some sensitization, and I'm sure it was extremely well received. But you are able to do, if you're sensitized, you can contribute in your little way. Now, the most important contribution which I would like to make, to mention because of my gender sensitization, was in 2006 when I joined as Election Commissioner of India. I had a look at the electoral rolls. I immediately asked my colleagues in the Women and Child Development Department to send me the gender index of the entire country in the context of electoral roll. And we saw that for 920 men, or for 1,000 men, there were 800 women, 750 women. Women were missing in millions. This is not acceptable. It became a part of our weekly routine to monitor the electoral roll for improvement of the gender ratio. And now I'm very happy to say that they are now in line with the gender ratio of the country. Now, even in the voter turnout, in 1962, male turnout was 16 percentage points more than women, which means almost 50% more. And now, women have overtaken men despite their adverse gender ratio. Because we had a special program, and I'm very happy to say that Prime Minister Shri Modi ji, in one of his Man Ki Baat program, he spoke for 4.5 minutes on election commission becoming citizen-centric. And his compliment, because we made efforts, because we set up a voter education division and which addressed these issues, and we made elections safer for women, facilities for women. There was no toilets, and one small thing that we did, sometimes the small ideas make a difference. I was reviewing UP election of 2012, one of the phases, and that was the first time we were doing a video conference. Otherwise, we used to physically go, talk to DCs and SPs. Then I asked my CEO there, what are you doing for facilitating women in the queue? He mentioned something. I said, can we send 2 women into the polling booth for every man who goes inside? Which means the women's queue will move doubly fast. It was magic. And within 5 minutes, the women were back home. वहाँ घर जाके वो अपनी पड़ोसन पूछती है, बहन, will you go to vote? उसने कहा, what do you mean I will go to vote? I have already voted and come back. Oh, it was so easy, so quick. So I'll also go. So that is why women are outnumbering men, despite their 940, the gender ratio, which itself is a sad story. But they're coming out in larger numbers than men, which is a great success.
Finally, I wish Smriti Irani ji was here. Women account for only 8.9% in the last election. Only 8.9% tickets for Lok Sabha were given to women. But you will be surprised to know, and you will be happy to know, that their winnability was much more, 14.6 as against 8.9, 14.61. And then I did an analysis since 1957, every election, the winnability of women candidates is much more than of men. Now when you talk to the politicians, कि औरतों को टिकट क्यों नहीं देते? साहब हमें देखना होता है, winnability देखनी होती है कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे. तो winnability तो इनकी proven है. 6% women, 9% result, 8% women, 12% result, 50% more better performance, despite their low economic status. Election में बहुत पैसा लगता है. Women के पास वो muscle नहीं है, financial muscle. Despite that, their winnability is so high. So why is it that the politicians don't understand this? And I think we need to break this myth. And finally, we hope that sooner than later, 33% seats in Lok Sabha are reserved for women, and also in Vidhan Sabha, just as it is working very well in Panchayats. 50%. Initially, when the reservation was made, people were making fun. अरे औरतें, women सरपंच कौन करेगा? उनका husband सब आके substitute करेगा. He will dominate, which happened for some time in some places. But these things are temporary. You enable them, put them on the chair, they will learn, and they will start bossing over their husband before long, and which is what happened. So I think we need to do a lot more proactive thing for women's empowerment, and education holds the key, and the Vice Chancellors, you are the key. I welcome you and beseech you that please do everything possible for empowering our girls and women. Thank you very much. Thank you, sir, for your words of encouragement. I would like to request Pankaj Mittal ma'am, who is Secretary General of Association of Indian Universities, to deliver her address. Thank you. Esteemed former Lieutenant Governor of Pondicherry, Dr. Kiran Bedi ji, respected Secretary Shiksha, Sanskriti, Utthan, Nyas, Atul Kothari ji, respected President AIU Professor G.D. Sharma ji, esteemed Chancellor of IILM University, whom you were just listening, former Chief Election Commissioner of India, Dr. S.Y. Qureshi ji, respected Vice Chancellor of IILM University, Dr. Sujata Sahi ji, Convener Mahila Prakosht, Shiksha Sanskriti Utthan Nyas, Shobha ji, distinguished chairpersons and speakers of technical sessions, representatives of apex bodies, representatives of international bodies, esteemed Vice Chancellor, I should say, esteemed sister Vice Chancellors from the women universities, many guests from the Shiksha Sanskriti Utthan Nyas. I am able to see Saroj ji, Mamta ji, Anita ji, Suresh ji, ladies and gentlemen, and faculty and students of IILM University, ladies and gentlemen. Not only sister, even brother Vice Chancellors are there. So a very good morning to all of you, and a very, very warm welcome to the first AIU National Women Vice Chancellors Conference. So this is for the first time we had the idea that we have, and why could we could gather the courage was that, like Dr. Qureshi was telling, that say 5, 6, 7 years ago it was only 15, today it is around 70, 75 women Vice Chancellors. Still the number is very low, but we could gather the courage that at least we have the sizable number of Vice Chancellors with whom we can interact. So first of all, I'd like to thank Shiksha Sanskriti Utthan Nyas for collaborating with us for this particular conference and for giving a lot of academic input. Atul ji ka bahut bahut aabhar. And I'd also like to thank IILM University for hosting this conference. Sujata ji has been giving a lot of attention to details. I mean, for minute details also she's taking care, and she's taking care of hospitality, academic activities, the program, the way we will be talking. I mean, it will be more like a round table, not a conference in which it will be a monologue. It will be more of a
round table, because we'll be shifting to a smaller room where we all can be heard, because this is our biggest problem, that our voices are not heard. So that's why we will be moving to a smaller room and where we will be heard. And a totally different type of experience, I feel, would be there. I mean, this is our project, that we should be having a different experience. About AIU, if many vice chancellors would be knowing, maybe our Kiranji or Dr. Qureshi, he himself has told so much about AIU. But something about AIU, that AIU is the largest university association of the world. Largest. It has a membership base of 955. Even when you talk of international, thank you. Even when you talk of international universities associations like IAU, International Association of Universities, or Association of Commonwealth Universities, which has multiple countries as the members, their also membership base is much, almost half of AIU's membership. So we are the largest and the second oldest association of the world. And second thing is that we are the only association which is engaging with the universities in multiple manners. We are engaging with the students, we are engaging with the faculty, we are engaging with the vice chancellors. Like this type of roundtables we hold with the vice chancellors, and many more webinars and All India University Vice Chancellors conferences and zonal conferences. We engage with the faculty in terms of holding many webinars for them, and also we have recently opened AADCs, we call them, Academic and Administrative Development Centers. And the main purpose was not to compete with HRDCs of UGC, but basically to train the faculty for using technology for teaching, learning, research. And that was a project prepared by Avinash Lingam in the beginning, and that we made as a national project now. And we have 10 centers right now. 15 we are opening more, so 25 centers will be there, where the teachers will be trained on using technology. Because when COVID came, we understood that there's a lot of problem in using technology for teaching learning. I mean, they have to be trained. We cannot be blaming. They have to be trained for effective teaching learning, using technology, using AI, using new tools which are coming up every day. We are engaging with the students in a lot more ways. We are doing a lot many cultural activities for them, because national education policy talks about holistic development of the students. So we are talking about the cultural activities. We do hold zonal youth festivals, national youth festivals, international youth festivals, where the students from international universities come and participate. We hold many sports events, around 225 sporting events we hold, in which around 5 lakh students participate every year. And like this month end, the students are going for World University Games in China. So around 250 students from Indian universities are going. I'm sure many of the students from your universities would also be going. So we do hold sporting events. And also you must be knowing about Khelo India University Games, which is a flagship event now, which is always inaugurated by the Honorable Prime Minister of India. And we also do many research projects for the students in terms of Anveshan. So that also we are now trying to internationalize, in the sense that we want that the research projects which the students are submitting, it should be joint research projects, one from Indian university, one from foreign university. So that also we are arranging now. Now, why this conference? This conference was because we saw that 70 are there, 75 VCs are there, women VCs, but it is a very small numbers. And not only in this sector, every sector, women are underrepresented, especially in the leadership roles. So if I want to give, and not only in India, everywhere, all over the world. So if I can share some data with you, for example, if you talk of political leadership. So in political leadership, global representation in national parliaments globally is around 22%. We are 50%, we are half of the population, but the global representation is also 22%. In India, we have Lok Sabha 14%, Rajya Sabha 12%, much below the mark. We fight for 33% reservation, but we should say, we shouldn't fight for 33% reservation, 50% is our right, because we are 50%, so we should be properly represented. If you talk of corporate leadership, in top 500 companies, globally, the representation of women is 29.5%. In India, it is 19.5% in the top 500 companies. If you talk of entrepreneurship, means how many businesses are owned by women world over and in India. So world over, women-owned business enterprises is 33%. In India, like MSMEs, if we see that how many MSMEs are owned by women, it is 20%. So everywhere we are low.
But in higher education, it is certainly very, very low. So again, if you see the world statistics in terms of academic leaders in higher education institutions like rectors, vice chancellor, presidents in various universities in the world, it is 17%. In India, it is 7 to 8%. And if we have a breakup of central universities, state universities, INI deemed universities, I was just seeing that in central universities, which is much better. Central universities, it is 12.76%. So 12 like 6 out of 47. So that is the central universities ratio. But the lowest is in institution of national importance. That is 6.6%. So that means IITs, IIMs, these institutions of national importance, out of 60, we have only 4 women vice chancellors. If you talk of state universities, it's okay. Out of 381 state universities, I'm talking of the universities which are under AIU's ambit. I'm not talking of all the universities, so only AIU ambit universities. So in state universities, out of 381 state universities, we have 44 women vice chancellors, which constitutes around 11.54%. In deemed universities, out of 119 universities, we have 13 women vice chancellors, which is 10.92%. Again, we feel that the government is to be blamed, but if you see the ratio in the private universities, state private universities, out of 331 private universities, only 20 women vice chancellors, which is only 6%. So that means lowest is in INIs, institutions of national importance, and private universities. And overall, out of UGC, AIU list, it is around 9%. But overall, if you see all the universities, it will be around 7 to 8%. And that is when the gross enrollment ratio of women is higher than that of men. Earlier, there was a gender gap, but now the gross enrollment ratio in higher education of women is 0.2% higher than the men. Whenever you go to any convocation, the gold medalists are women. First prize winners, or even first, second, third, all prize winners are women. So I was talking to Kiranji yesterday that where do all these gold medalists go? I mean, we don't see them. So this should be a study to be done by a university, which will be a long-term study of, say, 20 years, that what is the profile of these gold medalists? Where do they go after passing out? So that is there. And then I personally feel the issue is of stereotyping, issue is of attitude, issue is of glass ceiling. And I often quote this example that when I was the vice chancellor of the women university, a group of women vice chancellors from USA came, and then they told me that in USA, the women vice chancellors typically earn less than the men vice chancellors. I was almost shocked. I said, why does this happen? Because even in a country like India, which is a developing country, the salary of the women vice chancellor and man vice chancellor is same. So how can a developed country like USA have a differential that women vice chancellors are having less salary than the man vice chancellor? Then she says in USA, the salaries are not fixed. They are negotiated over the table, and women tend to negotiate lower. They don't feel that we are worth that much. So that is the issue of attitude, which we all have to change. Society has to change towards the government, towards the women, because we know even women cricket players are paid less than the men cricket players for the same games. So why should that dichotomy be there? So that is the purpose we are holding this conference. We'll be having 6 sessions, and these sessions will be on gender equity and inclusivity in higher education, roles and contribution of women in promoting higher education. Third will be on enabling women for tech-enabled higher education, including AI. Dr. Nupur Prakash is an expert in AI. She'll be talking here. International perspective in women leadership. We have 2 international minister counselors. One is Monica Kennedy ji. She is sitting here. She is the minister counselor from Australia. And one, Gloria, she'll be coming tomorrow. She is the minister counselor from Embassy of USA. We'll be talking about the role of women in creating a humane society, because we know that women does contribute in creating a humane society. And we'll be talking about skilling women to create Atmanirbhar Bharat, a call which has been given by the Honorable Prime Minister of India. And this conference is not a monologue, which I told in the beginning. Therefore, we don't have 4, 5, 6 speakers in every session. Every vice chancellor is a speaker. So what we are doing is that in the beginning, one chairperson will be introducing the topic, and then there will be a roundtable discussion in which everybody will be getting a chance to speak. And we propose to give a very good report out of this. I mean, we want to send it to the Prime Minister also, that this is what women vice chancellors think. This is the way we should be progressing. This is the way we can be promoting leadership in academic institutions. So it will be more of a roundtable. Only one person will be introducing, and one person will be concluding in the end. Rest, the floor is all yours.
So thank you very much. Thanks to IILM for hosting this conference. And I'm sure I'm really sure that we'll be bringing out a very good report with some tangible recommendations which can be implemented not only by the government and the regulatory authorities, but also by the universities across country and even maybe abroad. Thank you very much. Thank you. Esteemed dignitaries, although Dr. Mittal does not need any introduction, but we would like to give a small brief about her distinguished contributions in academia. So, we are honored to have with us a distinguished personality, Professor G.D. Sharma, President AIU and Vice Chancellor of University of Science and Technology, Meghalaya. Professor G.D. Sharma is a distinguished educationist, renowned scholar, esteemed life scientist, and an accomplished academic administrator in India. Drawing from his extensive expertise and experience, he envisions the rapid development of Central and Northeast India through his comprehensive master plan. Professor Sharma's remarkable contributions to education and research have earned him several prestigious awards and honors. These include Dr. Narasimha Medal Award by the Indian Phytopathology Society, the Rashtriya Ratna Award by the International Study Center, Deet Award by the Confederation of Indian Universities affiliated to UNESCO, Bibul Sani Award by the Indian Botanical Society Education Excellence Award by CCLP Worldwide, Vidya Ratan National Samman by All India Higher Research Sanskrit in Raebareli, Outstanding Educational Contribution Award by CMAI in New Delhi at the National Chhattisgarh Education Summit, Swami Vivekanand Excellence Award by the International Institute of Oriental, Indo-Asian Eminent Vice Chancellor Award, and the Vivek Jyoti Ananya Samman, that's a Lifetime Achievement Award presented by Swami Vivekanand University, Kolkata. Dr. S. Radhakrishnan Education Excellency Award presented by the Indian Ministry of Education. These accolades exemplify his exceptional contributions and dedication to the field of education. In addition to his academic accomplishments, he was deputed by the Ministry of External Affairs to Myanmar to uplift the higher educational standards. He has edited and authored 13 books showcasing his expertise and knowledge in his respective field. Professor Sharma's international presence extends to numerous countries where he has engaged in various academic activities and assignments. He has been honored with fellowships from esteemed academic societies, further acknowledging his contributions to the field. We deeply appreciate and feel honored to have you, sir, with us today. Indeed, we are eagerly looking forward to the insightful sharing that lies ahead. Thank you, sir. Good morning to all respected Honorable Vice Chancellors and dignitaries on the dais. In this first National Women Vice Chancellors Conference on promoting women leadership in higher education, organized by Association of Indian Universities, Shiksha, Sanskriti, Utthan, Nyas, and IILM University, Gurugram, Haryana. We have today the chief guest, Srimati Smriti Jubil Irani, Honorable Union Minister, Women and Child Development, and Ministry of Minority Affairs, Government of India. The special guest of honor, Dr. Kiran Bedi, former Lieutenant Governor of Puducherry and well known for her administrative caliber as well as how she has brought changes in many spheres wherever she has been. Honorable Chancellor of IILM University, former Chief Election Commissioner, Dr. S.Y. Qureshi ji, who has given a wider spectrum of development of women, particularly in India, and also the role of government and how the evolution of
role of women is taking place in our country. Dr. Atul Kothari ji, Honorable Secretary of Shiksha, Utthan, Nyas, and also a reformer in education both at the school level, the secondary level, and higher education level. In our country, he is the person who has brought a number of changes, particularly how education can be brought into the mother tongue language or the local language, and therefore he is the torch bearer of bringing changes in the taking the those ethos and values which are there in our Indian education system. Dr. Pankaj Mittal, Honorable Secretary General of AIU, you have just heard her, and who has taken this lead to organize the first Women Vice Chancellor Conference. Though there were number of Vice Chancellors earlier, but even they did not think of organizing the first Vice Chancellors Conference. But being the Lady Secretary General, who is very dynamic, you must have seen in last 5 years during his as Secretary General, lot of things have been brought by her. New initiatives have been taken place, the transparency in the functioning of AIU, and also taking AIU to not only at national level but international level. Because of her all these efforts, now we have 955 members of AIU, including nearly 20 universities from different foreign countries. And we are getting so many now requests from foreign countries to have collaboration with Indian universities. So because of her way of thinking and all these things. And I may just say that this is just beginning of having first woman Vice Chancellor Conference, but there will be more activities during this Amrit Kal, and during this, because AIU is also going to complete 100 years of its existence, one of the second oldest in the world and one of the largest association. So with your all cooperation and support, I am sure that we will be able to show the strength of women, because we have been also expecting the maximum participation of women in this. Our former president of AIU, Dr. Ranveer Singh ji, and who had been very much supportive, and also he has made significant contribution in this. And also particularly the Honorable Vice Chancellor of IILM, Dr. Sujata Sahi ji, who has taken this lead to provide and host and also be part of this organizing of the first women conference of the Vice Chancellors. And what we have seen, that now the women who are the founder Vice Chancellor of many universities, those universities have got very good start. Even in Delhi, we have seen for the first time, the JNU got the first lady Vice Chancellor. And after that, so many changes are taking place. So many changes. Similarly, Jamia Millia, first time the lady Vice Chancellor is there. You might have seen her role as the judge on this India TV news. She was working, and the way she has conducted is tremendous. Other
Vice Chancellors, we have Dr. Ami Upadhyay. The A++ means Dr. Nilima Gupta. A+ means they have taken the university to a new field of not only quality, but also those traditions which were there in built in our ethos, in our culture, Indian cultures. Along with that, how the quality can have the better adaptability and evolution. That is more important. Not blindly following the Western way of the culture, Western way of the education, but also keeping the Indian ethos and values of the Indian system. As we know that in India, if we see the ancient time, the women have got the equal rights, and even the village or the area where women have liberty to do the work as per their own wishes. That is more important. That not only equality, not only the reservation, not only the number, more important is the equality with dignity. So that means there is a need of social change. When economic change is taking place, women are taking very important part. Wherever women are there in economic things also, they are on top. And they are doing one of the best contribution in all the fields. But still, the stigma is the social stigma, that we are not able to spread at the level of masses, where the respect for their dignity, the respect of their ability can penetrate. That is the great challenge to us. And once this comes, naturally, there will be great change in peaceful coexistence of the world, not only India, but at world level. Because women have most adaptability, women are not destructive, they are all constructive, and they want evolution. They all belong to the evolutionary contributions, and therefore this will help how the society, the new generation society, particularly in 21st century, can be having those value system of humanity. In India, the medieval period somehow has brought a number of changes. Those changes are slowly vanishing, but their rate of vanishment is very slow. I am sure that due to the education, as Madam Pankaj Mittal said, that about 20 years back, the women's in education system were, girls' children were hardly 30%, now little more than 50%. Since I come from Meghalaya, there the girls students are much higher. In our university, we have 77% workers, women workers, and 65% girl student. And I feel happy to inform you, we did not have even a single day any problem there, because they are able to manage so easily, so quietly, and many students who come with so much things in their mind before coming to university, but when they meet our registrar, the woman registrar, they come down. So they have the very cooling effect. And that is what it is required for peaceful development, for educational, when we say quality, these are necessary. And once we find
not only 75, but if this pyramid becomes reverse, then we will find there will be a lot of change. And this change is necessary. On behalf of the AIU, I request you all, please give suggestions because a number of initiatives are going to be taken, particularly how we can involve more women in various activities, especially the research activities, how we can take India to Atmanirbhar Bharat. You have seen recently the Chandrayaan and the lady who is in charge, this time most successful Chandrayaan, because of their, you see, the devotion and also the way they manage, we all have to learn. So, not taking much time, I will request you all to please make contributions and give suggestions for the AIU to make more vibrant, and also how we can organize more such programs which will also help to bring out the more and more respect, dignity, and also the rights of women in our society. Thank you very much. थैंक यू सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट। आज हमें गर्व है कि हमारे साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्री अतुल कोठारी जी, सचिव शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास शामिल हैं। कोठारी जी शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक हैं और शिक्षा कार्यों हेतु निरंतर व्यापी प्रयास करते हैं। देश में शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक कार्य वाली संस्थाओं और विद्वानों को एक मंच पर लाने के लिए निरंतर यत्नशील हैं। सर हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड के भी सदस्य हैं और भारतीय भाषा मंच और अभियान के संरक्षक हैं। पूर्व में सर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वैल्यू एजुकेशन बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के सदस्य रह चुके हैं। चरित्र निर्माण के समग्र विकास पाठ्यक्रम समिति के भी सदस्य रह चुके हैं और शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति 2004 के आद्य संस्थापकों में से एक हैं। कोठारी जी निम्नांकित विचार सूत्रों के पुरस्कर्ता हैं। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। समस्या की नहीं समाधान की चर्चा करें। माँ, मातृभूमि एवं मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। हम आपका विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारा साथ देने के लिए आभार प्रकट करते हैं और आपकी मौजूदगी से मूल्यवान दृष्टिकोण प्राप्त करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। महिलाओं के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन सत्र मंच पर उपस्थित डॉक्टर किरण बेदी जी, डॉक्टर खुरैशी जी, जिनका अभी भी वक्तव्य हमने सुना, 1 जुलाई को ही आपने AICT के चेयरमैन का चार्ज लिया है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रोफेसर शर्मा जी, डॉक्टर पंकज मित्तल जी, बहन शोभाताई, होस्ट यूनिवर्सिटी के सम्मान्य कुलपति, देश भर से आए हुए सम्मान्य महिला कुलपति, इस सभागार में उद्घाटन कार्यक्रम में विशेष निमंत्रित सभी कुलपति महोदय, विद्वान आचार्य बंधुओं बहनों, प्रिय छात्र भाई और बहनों, ये बहुत आनंद का विषय है कि वैसे आनंद का विषय है और थोड़ा कष्ट भी होता है कि पहली बार महिला वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस हो रहा है देश में। लेकिन थिंक पॉजिटिव कि स्टार्ट तो हुआ है, ये स्टार्टिंग है, एंड नहीं है। आज जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो विभिन्न विषयों का हमने डिस्कशन करना है, हम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो हमारा है, तो उसका हमारा ध्येय वाक्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। इफ यू चेंज द कंट्री, चेंज द एजुकेशन सिस्टम।
ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, चाहे विमेंस के प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो कंट्री के या इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो, सबका बेस वही है, एजुकेशन सिस्टम। आज जो भी नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, उसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो थ्रू एजुकेशन ही प्राप्त हो सकता है। इस दृष्टि से एजुकेशन चेंज ये मेन इश्यू है। और एजुकेशन चेंज के लिए हमारे देश में विद्वानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो 2 वाइस चांसलर एक स्टेज पर नहीं, बहुत कम आते थे या नहीं आते थे। तो हमने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने यह प्रयास प्रारंभ किया है कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी भविष्य की योजना है, अपॉर्चुनिटी है, इसका डिस्कशन सामूहिक मिलकर करें। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। जहां प्रॉब्लम होता है वहीं सॉल्यूशन होता है। हम सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, बाहर नहीं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अंदर होता है। इसलिए महिला विमेन कॉन्फ्रेंस का यही हेतु है कि जो महिलाओं की समस्याएं हैं, महिलाओं के आगे बढ़ने की बात है, महिलाओं की एजुकेशन की बात है, समानता की बात है, समावेशी की बात है, लीडरशिप की बात है, टेक्निकल नॉलेज की बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, और इस सब को मिलाकर भारत को आत्मनिर्भर करना, भारत को फिर से एक समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न भारत बने, इस दिशा में ले जाने के लिए सब महिला वाइस चांसलर क्या योगदान दे सकते हैं। जिस प्रकार का ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसी प्रकार अभी बिफोर 2 मंथ्स हम लोगों ने AICT में IIT, NIT, IIIT, नीटर, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आईसर, ऐसे सभी के डायरेक्टर और वाइस चांसलर का कॉन्फ्रेंस हमने किया। आपको आश्चर्य होगा कि मुझे कुछ NIT डायरेक्टर्स और IIT डायरेक्टर्स ने बताया कि हम फर्स्ट टाइम AICT में आ रहे हैं। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का सिनेरियो है आज की। सब टेक्निकल एजुकेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन AICT सबसे बड़ा देश का संस्थान, वो उसमें एंट्री नहीं कभी की उन्होंने। लेकिन बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ। तो इस प्रकार हम अलग अलग सेक्टर के लोग जो है सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन और आगे की अपॉर्चुनिटी की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसका प्लानिंग करें। हम लोग एक 1100 नाम के प्रोग्राम करते हैं। बहुत लोग आप में से आए थे, इसमें मुझे मालूम है। थ्रू आउट कंट्री 5000 लोग आए थे उसमें। इसमें स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, सभी लेवल के एजुकेशन के लोग आए थे। और स्टूडेंट्स से लेकर स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे इस कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में। झाबुआ जो ट्राइबल एरिया है मध्य प्रदेश का, सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वो, वहाँ के स्टूडेंट्स, ट्राइबल स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं गए थे, वो दिल्ली स्टूडेंट्स आए थे उसमें से। और इस प्रकार के सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, सेक्रेटरी, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, सब प्रकार के लोग आए थे। और सब ने मिलकर एजुकेशन में बदलाव, परिवर्तन के लिए और एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब मिलकर क्या दिशा में प्रयास कर सकते हैं, इसका प्लानिंग किया वहां। तो इसी प्रकार इस सम्मेलन में भी, जैसे पंकज मित्तल जी ने कुछ शब्दों में बताया, कि सिर्फ ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। एकेडमिक एक्सरसाइज तो एक कोई भी इश्यू में स्टार्टिंग के लिए, कोई भी काम स्टार्ट करना है, कोई भी वर्क स्टार्ट करना है, तो इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, चाहे सेमिनार हो, सिंपोजिया हो, कॉन्फ्रेंस हो, आदि आदि एक्स्ट्रा। तो इस सम्मेलन में हम 2 दिवस चर्चा करेंगे, इसका रिपोर्ट एक पब्लिश करेगी, पंकज जी ने कहा ऐसे, वो तो है ही। लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट? इसमें अलग अलग 6 विषयों पर डिस्कशन होने वाला है, 6 सब्जेक्ट पर।
तो इतने ब्रॉड सब्जेक्ट है कि 1.5 आवर में इसका डिटेल डिस्कशन नहीं हो सकता है। इंट्रोडक्शन होता है, कुछ इंटरेक्शन होगा, इसलिए हमने पहले से पंकज जी को मैंने कहा कि लेक्चर नहीं होना है सिर्फ, नहीं तो अधिकतर सेमिनार कॉन्फ्रेंस हमारे लेक्चर ही होते हैं और सुन सुनकर लोग घरे चले जाते हैं। तो लेक्चर बहुत कम होना है और डिस्कशन ज़्यादा होना है, तभी कुछ फ्रूटफुल बातें होगी इसमें से। तो इस दृष्टि से, और ये जो 6 सब्जेक्ट है, इसके अलावा भी और कोई विषय हो सकते हैं, क्योंकि 2 दिन का एक समय कम है, तो उसमें सभी विषयों पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम ये 6 सब्जेक्ट पर अलग अलग यूनिवर्सिटी आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकता है क्या? तो आज 2 दिन समय है आपके पास, प्लान करिए। और लास्ट सेशन में मेरा पंकज जी से निवेदन है कि इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए 15-20 मिनट, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, आगे की योजना के बारे में। और तब तक हम डिसाइड कर ले कि 6 यूनिवर्सिटी का 6 कॉन्फ्रेंस प्लानिंग हो जाए 2 दिन में। तो इसको ये AIU हमने मिलकर सबने एक स्टार्टिंग किया है। हर जगह देश में नहीं कर सकता है AIU, ना हम कर सकते हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी लेवल पर करिए, फिर आगे कॉलेज लेवल पर होगा। तो ऐसे ये देश भर में इस पर एक्सरसाइज आगे बढ़े, और साथ साथ प्रैक्टिकली क्या करना है इसका इम्प्लीमेंटेशन का भी प्लान बने। तो इस प्रकार का फॉलोअप एक्टिविटीज भी इस कॉन्फ्रेंस में हमने प्लानिंग करना चाहिए, तभी कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सर होगा हमारा। दूसरा मेरा निवेदन है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका हमने यहाँ वीमेंस के कुछ इश्यू है उसको लेकर डिस्कशन किया है, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट हैं कि आज महिलाएं घर से बाहर है जब, तो एक अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। सक्सेसफुल स्टोरी भी है इसमें बहुत सारे, और ये वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, भारत का नहीं है, कि अभी फैमिली मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट में क्या चेंज लाना है। कि हमारा फैमिली जो भारत का बेस है वो फैमिली है, परिवार है। HSS हिंदू स्वयंसेवक संघ का एक कॉन्फ्रेंस था इंग्लैंड में, तो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मैडम थेचर इसके इनॉग्रेशन के लिए आई थी। तो उनके स्पीच में उन्होंने कहा कि आप भारत के लोगों को हमने क्या सीखना है, तो हमने फैमिली कॉन्सेप्ट आपसे सीखना है। थ्रू आउट वर्ल्ड में पूरे विश्व में ये भारत की जो विशेषता है, ये सिर्फ एक छोटा फैमिली की बात नहीं है, 2 बच्चे, पति पत्नी, वहां तक नहीं है ये बात। ये हमारा एजुकेशन फैमिली है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है अलग अलग, कोई वाइस चांसलर है, कोई डीन है, कोई प्रोफेसर है, कोई स्टूडेंट्स है, कोई नॉन टीचिंग है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी चेंज होता है, कपड़े ड्रेसेस चेंज करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो है इंपॉर्टेंट लेकिन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मेन है कि ये हमारा एजुकेशन फैमिली है। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हमारा फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? तो उसका सॉल्यूशन हम करते हैं कि नहीं करते? उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है क्या? हेजिटेशन करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता है। आपस में बातचीत, संवाद से, कम्युनिकेशन से हम सॉल्यूशन करते हैं किसी प्रॉब्लम का। तो हमारा ये यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, स्कूल है, ये हमारा एक फैमिली है, एजुकेशन फैमिली है। वाइस चांसलर इसके हेड है, घर में एक हेड होता है, हर घर फैमिली में भी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम लाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। और हम हर लेवल पर फैमिली कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है। इसका डिस्कशन अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, हम एजुकेशन की बात अभी करेंगे। तो इस प्रकार के क्या क्या टॉपिक्स इस प्रकार के हैं कि जो आज हमारे सामने चैलेंजेस है, इसका भी एक फ्री डिस्कशन का एक सेशन, लास्ट सेशन में इसके सजेशन आने चाहिए। रूटीन सब्जेक्ट पर तो डिस्कशन सब जगह होता है,
लेकिन इस प्रकार के जो इश्यूज हैं, इस पर डिस्कशन ज्यादा करने की आवश्यकता है। और आज जो मेन प्रॉब्लम मेरी दृष्टि से क्या है, मैं थोड़ा अलग सोच रखता हूं, क्षमा करिएगा मंच पर बैठे हुए सभी से और आप सब से, कि मेल फीमेल का कंपटीशन की सब दृष्टि से न सोचे हम, न कंपटीशन की बात करें, न हम इसके कंपैरिजन की बात करें। किसी कंपैरिजन नहीं हो सकती, दो भाई की भी कंपैरिजन, दो बहनों की भी कंपैरिजन नहीं हो सकती है। और जहां वो कंपैरिजन होती है वहां समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इसलिए हमने विमेन्स को स्ट्रेंथन कैसे करना है, इस दिशा में एक पॉजिटिव प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो विमेन को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग करने का सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरी दृष्टि से। क्यों आज महिलाओं पर अत्याचार होता है, या क्या स्त्रियों पर या गर्ल्स पर अत्याचार होता है पुरुषों के द्वारा? क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग नहीं है हम। एक मेंटालिटी भी, मानसिकता भी है कि हमेशा हम, आप देखिए सीरियल आती है, मैं कभी कभी देख लेता हूं सीरियल भी, तो महिला लीड रोल में ऐसी सीरियल तो बहुत अभी आने लगी, लेकिन वो लीड करने वाली महिला, लीडर महिला जो उसमें होती है, उनको भी बार बार रोते हुए दिखाया जाता है। क्यों? पुरुष लीड करता है, मैन तो उनको रोते हुए नहीं दिखाया जाता है। ये जो मेंटालिटी है ना, वो माइंडसेट चेंज करना है हमने। इसलिए फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग करने का प्लानिंग हर यूनिवर्सिटी में, हर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। कि किसी गुंडा बदमाश महिला के सामने आंख उठाने का हिम्मत देखने की कैसे करे? अगर करेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। इस प्रकार की कैपेसिटी हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स और वीमेंस में डेवलप करनी चाहिए। इसके लिए जो जो प्लानिंग है वो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए। तो फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग करने के लिए, अगर फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो गई महिलाएं, स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो कोई भी चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए तैयार होगी और उसको, उस पर विजय भी प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार का ऐसे जो जो बातें हैं, इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए और उसका प्लान करना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम क्या है वहां टच करना है हमने। तो इस प्रकार के एक इश्यू पर डिस्कशन हो, क्योंकि महिला, इसमें आया कि महिलाओं की भूमिका क्या है अलग अलग सेक्टर में, हायर एजुकेशन में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल वगैरह। तो नेचुरली जो स्किल हमारी महिलाओं में है उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, चाहे वो ट्राइबल एरिया की हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे विलेज की हो या सिटी की हो। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश सागर, उन्होंने लॉकडाउन में स्किल डेवलपमेंट और इसके आधार पर आत्मनिर्भरता पर काम स्टार्ट किया। तो 300 वीमेंस को उन्होंने जॉब दिया। और कैसे काम करती है महिलाएं? बिल्कुल वो इलिटरेट थी, लेकिन वो वेस्ट में से बेस्ट क्लोथ्स तैयार करती थी, वो कपड़े तैयार करती थी। और किस प्रकार का प्रिपरेशन उनका, कि वो कलेक्टर वो एग्जीबिशन देखना आए, तो कलेक्टर अपनी पत्नी के लिए और अपनी बेटी के लिए उसमें से कपड़े खरीद कर ले गए। और उन्होंने कहा कि इस महिलाओं को तो लोन देना चाहिए, और 100 से ज्यादा महिलाओं को लोन दिया उन्होंने। फिर क्या हमारी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा सकते हैं क्या? इसी से महिला स्ट्रेंथन होगी ना। उसमें है स्किल, है कैपेबिलिटी, है सब है, बस प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा है उनको। तो आत्मनिर्भर भारत में मेन रोल विमेन का है मेरी दृष्टि से हमारे देश में। क्या हम हमारे स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बना रहे हैं क्या? बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, मैं अभी भी बिफोर 1 वीक था वहाँ, हमारा MOU भी है उनके साथ और मैं उनके
एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट के लिए कमेटी का एडवाइज़र भी हूँ। वहाँ 40% स्टूडेंट्स को सेल्फ रिलायंस हो गए हैं, वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। वो माँ बाप से पैसा नहीं लेते फीस के लिए। और प्लान है कि नेक्स्ट 3 ईयर में 100% स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे। तो इस प्रकार के इश्यू को हमने कैसे टेकअप करना है, इस पर प्लान भी होना चाहिए। हम लोग प्रैक्टिकली आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे हैं देश भर में। 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमारे साथ एफिलेट हुए हैं इस काम में। तो ये जो सारे सब्जेक्ट है इस कॉन्फ्रेंस के, इसका मैं एक ही बात कहूँगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको अगर प्रॉपरली हम स्टडी करेंगे, किया ही है आप लोगों ने, तो इनकी भाव क्या है, उनके शब्द क्या है, और इसको फिर इम्प्लीमेंटेशन का प्लान करेंगे, तो ये सारे इश्यू को हम कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार का प्लानिंग ये 2 दिन में हम करें, और फॉर्मल सेशन तो होगा, इनफॉर्मली भी बहुत सारा टाइम होगा, और एक ही होटल में सारे लोग रुके लगभग। तो इनफॉर्मली क्या हम सभी यूनिवर्सिटी एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं क्या? इसका MOU हो सकता है क्या महिला वाइस चांसलर के साथ? तो कहते हैं ना कि 1+1 तो 2 होता है, 1 के पास 1 रख देते हैं तो 11 हो जाता है। तो इस प्रकार का प्लानिंग से हम आज के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और लास्टली मेरा सजेशन है कि जैसे AIU हम साथ मिलकर ये कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट वीमेन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भारत में, क्या AIU, अभी शर्मा साहब भी कहते इंटरनेशनल भी MOU है हमारा, तो पंकज जी विचार करें कि क्या ऐसा इंटरनेशनल वीमेन्स कॉन्फ्रेंस भी हम कर सकते हैं क्या AIU के साथ मिलकर? तो मुझे लगता है कि ये मैसेज सारे वर्ल्ड में हम, भारत उसमें लीड करेगा। अभी समय गया है कि भारत फॉलोअर रहेगा, अभी भारत लीड करने का समय है। तो भारत के वीमेन वाइस चांसलर और इस फील्ड में हम सब मिलकर भी लीड करें, ऐसा एक इंटरनेशनल वुमेन्स वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस भी करने का विचार करेंगे तो बहुत आनंद की बात होगी। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया IILM यूनिवर्सिटी ने, और मुझे भी इस विशेष कार्यक्रम में निमंत्रित किया, कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। इसलिए मैं सभी आयोजक का, और विशेष करके IILM यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उनके सारे परिवार का, आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your insights. Esteemed guests and honorable delegates, we feel honored to have with us a distinguished personality, a beacon of inspiration and a paragon of excellence in her field, Dr. Kirat Bedi, former Lieutenant Governor, Puducherry. Dr. Bedi is an Indian social activist, former tennis player who became the first woman in India to join the officer ranks of the Indian Police Service in 1972. She was the 24th Lieutenant Governor of Puducherry. Having served for 35 years, she took a voluntary retirement in 2007 as Director General, Bureau of Police Research and Development. As a teenager, Dr. Bedi was crowned the National Junior Tennis Champion and has won several titles at various national and state level championships. After joining IPS, Dr. Bedi served in Delhi, Goa, Chandigarh, and Mizoram. She started her career as an assistant superintendent of police in the Chanakyapuri area of Delhi and won the President's Police Medal in 1979. Next, she moved to West Delhi, where she brought about a reduction in crimes against women. Subsequently, as a traffic police officer, she oversaw traffic arrangements for the 1982 Asian Games in Delhi and the Commonwealth Heads of Government meeting in Goa. As Deputy Commissioner of Police in North Delhi, she launched a campaign against drug abuse, which evolved into the Navjyoti Delhi Police Foundation, renamed as Navjyoti India Foundation. In May 1993, Dr. Bedi was posted to the Delhi prisons as Inspector General.
She introduced several reforms at Tihar Jail, which won her the Ramon Magsaysay Award in 1994. In 2003, Dr. Bedi became the first Indian and first woman to be appointed head of the United Nations. With an unwavering passion to focus on social activism and writing, she runs the India Vision Foundation. She also hosted a court show in 2008, Aapki Kacheri. She was one of the key leaders of the 2011 Indian anti-corruption movement and joined the Bharatiya Janata Party in January 2015. Please join us to welcome Dr. Bedi with a resounding round of applause. With a wealth of knowledge and experience, we are certain to gain invaluable insights and inspiration that will enrich our lives and endeavors. आपको सबको मेरा प्रणाम साथियों। आप सब एजुकेशन की फील्ड से आए हैं, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। मैंने भी अपनी एजुकेशन की फील्ड अभी तक जारी रखी है। स्कूल से अब तक आई एम अ स्टूडेंट टिल नाउ। आई स्टडी एवरी डे, आई रीड एवरी डे, आई लर्न एवरी डे। इसलिए मैं आपकी फैमिली से ही हूँ। मैंने पंकज जी को बोला, want to thank the following for making this event possible. The Vice Chancellor of IILM, Dr. Sujata Sahi, our Chancellor, Dr. Qureshi, an old friend and a very learned friend, Pankaj Mittalji, for always being inspiring and co-opting me in many ways she wants. The presidential address given by Dr. Sharma, I hope ये सेशन एक दिन आप मेघालय भी ले जाएंगे. Dr. Saroj Sharma sitting here, my very dear friend, जिसके हाथ में मुट्ठी है सारी स्किल्स की, राष्ट्र की स्किल्स की इसके हाथ में मुट्ठी है, नेशनल NIOS की वजह से मैं आपकी ताकत पहचानती हूँ. श्री कोठारी साहब, आपने रोड मैप दे दी है, मेरी अब जरूरत नहीं थी. आपने सब कुछ एक एज अ शिक्षक, एज अ टीचर आपने सबको एक मार्गदर्शन दिया है. शोभा पैतनकर जो कन्वीनर है यहाँ की, तमाम वाइस चांसलर्स मेरी सहेलियाँ आई हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स आए हैं, प्रिंसिपल्स आए हैं, एकेडमिक्स आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं. आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से आज ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा है. जब मुझे पंकज जी ने इनवाइट किया, डॉक्टर मित्तल ने, मेरे लिए इमीडिएटली था कि कुछ भी और करें इधर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक थी वाइस चांसलर्स को मिलने का, क्योंकि मुझे पता है वाइस चांसलर का रोल क्या है. मैंने कई वाइस चांसलर्स की यूनिवर्सिटीज़ को बड़े करीब से देखा है. पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को तो बहुत करीब से देखा है, और बाकी के जहाँ मुझे इवेंट मौका मिला आपके यहाँ जाने का. हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में मैं गई, जिनकी वाइस चांसलर इज़ द लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर कनितकर, माधुरी कनितकर, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर ऑफ इन नासिक. बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी. क्या परिवर्तन आ गया है जब से वो गई हैं. एक गार्बेज डेंट से शी इज मेड इनटू अ फॉरेस्ट एंड एन ऑर्चर्ड. इट्स वर्थ सीइंग. आपको मेरी फ्रेंड्स को जितनों को भी मौका मिले ज़रूर जाके उनको देखिए कि 2 साल में उन्होंने क्या परिवर्तन एज अ वाइस चांसलर किया है. इट्स अ मॉडल फॉर एनी यूनिवर्सिटी एंड एनी वाइस चांसलर. बल्कि मैंने उनको प्रार्थना की है कि अपनी बुक लिखो ऑफ ऑल द गुड प्रैक्टिसेस शी इज डन एवर सिंस देन. मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बड़ी क्लोजली उसको देखने के लिए, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रही हूँ. ऐसे ही मुझे औरों को भी मिले मौका तो ज़रूर. मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का ये बता रही हूँ, माफ़ करना, एक हकीकत भी बताना चाहती हूँ. 2 साल पहले जब पौंडीचेरी में वाटर, मैं अपनी बात तो कहूँगी, आपको आइडियाज़ दूंगी आगे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण देना चाहती हूँ जो कि हम लोग कई बार चूकते हैं अपनी सच्चाई बताने के लिए. 2-3 साल पहले पौंडीचेरी वॉज गोइंग ड्राई, और जब पानी का स्तर गिरता जा रहा था तो बारिश, और पौंडीचेरी सिर्फ
और ये हर यूनिवर्सिटी की सिचुएशन है तकरीबन तकरीबन, इसलिए आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। तो वो जब गिर रहा था तो हमने ये फैसला किया कि वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे प्रधानमंत्री जी आजकल भी कहते हैं सेव द वाटर वेयर एवर रेन वाटर ड्रॉप्स। तो क्योंकि वाटर गिरता जा रहा था, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के पास 800 एकर्स ऑफ लैंड, तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन सबके पास बहुत ही अच्छी ज़मीन है। तो हम लोगों ने मेजर एरियाज़ में जाके देखने की कोशिश की, शुरू करी कि कहाँ कहाँ वाटर हार्वेस्टिंग ठीक से हो रहा है। और उस एरिया में जहाँ पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर फ्लड, टोटल फ्लडिंग होता था उस एरिया में, और फ्लडिंग होके फिर वो जाके समुद्र में चला जाता था। मीठा पानी फ्लड में और समुद्र में जा रहा है। सो वी स्टार्टेड टू सी व्हाट इज रॉन्ग। तो हम लोग, जैसे मैंने कहा, हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में। मैं यूनिवर्सिटी पांडिचेरी की यूनिवर्सिटी में भी गई। जब मैंने देखा, आपको हैरानी होगी सुन के, 800 एकड़, इतना ज़बरदस्त फॉरेस्ट, ज़बरदस्त ट्रीज है उनके, वो ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे थे उन पेड़ों को पानी देने के लिए, ग्राउंड वाटर। जब मैंने वो देखा कि ग्राउंड वाटर, वहाँ पर वाइस चांसलर साहब गुरमीत सिंह जी थे, तो वहाँ मेरे दोस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी से गए थे। मैंने उनको कहा, डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार कह रही है वाटर हार्वेस्टिंग करो, हमारे पास यहाँ 800 एकड़ है, और आपके पास तो डिपार्टमेंट्स भी हैं, आपके पास 60,000 स्टूडेंट्स भी हैं, आप श्रमदान भी करने लग जाएं तो आपकी वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बन जाएगी। तो क्या हमको करना नहीं चाहिए? क्योंकि यही तोड़ के दीवारें और सारा मीठा पानी, 800 एकड़ है, कम से कम 80 वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स तो बना लें। उनके पास उस वक्त 4 थी, चारों में से 2 की मशीन भी नहीं चल रही थी। तो हमने तय किया, डॉक्टर साहब ने भी तय किया, सब ने एग्री किया कि नहीं, अब हमको हर हालत में ये करना ही। और हमने भी, टू बी ऑनेस्ट, आई थ्रेटन देम एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर कि आप नहीं करेंगे तो मैं आपकी बिल्डिंग का सस्पेंड करूंगी, कोई ना कोई बिल्डिंग, उसको सील अप कर दूंगी। आई विल नॉट लेट दिस हैपन। व्हाई आई एम ट्राइंग टू से, हम यहाँ सिर्फ हम लोग अपनी तो बार शाबाश करने आते हैं। वाइस चांसलर के हाथ में क्या नहीं है? बल्कि मैं पूछना चाहती हूँ, वाइस चांसलर के हाथ में क्या नहीं है? सारी यूथ तो आपके पास है, यूथ और कहीं नहीं। स्कूलों से मिलती है आपको यूथ, लेकिन उस रिसोर्सेज का उस रिसोर्स का हम लोग क्या करें, ये अपनी अपनी काबिलियत है। मैंने आपको उदाहरण दे दिया, मुझे पता है डॉक्टर साहब को मैसेज मेरा जाएगा कि किरण ने आज सारी वाइस चांसलरशिप में, लेकिन मैं ऐसा उदाहरण नहीं दूंगी तो आप मुझे विश्वास क्यों करोगे? और साथ में आप क्यों नहीं ये मैसेज ले जाओगे? खुशी की बात यह है, आई वांट टू थैंक हिम कि उन्होंने ये बात सुनी और उन्होंने रजिस्ट्रार और अपनी फैकल्टी को बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं एक्सेप्टेड, मैडम हमें कुछ दिन दो, हम करते हैं। तो यू वॉन्ट बिलीव इट, 2 महीने में दे हैड क्रिएटेड दीज वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स। और जब बारिश आई, वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स इतनी सूखी हुई थी कि पानी भरता था तो नीचे जा जा रहा था, भरता था तो नीचे जा जा रहा था। दैट एरिया now had its own water harvesting level improved to meters and meters. जो पानी वो फ्लडिंग कर रहा था उसमें चेंज आया। तो चेंज किसने किया? 2 जनों ने चेंज किया, एक तो प्रशासन जिसका काम था और दूसरा वाइस चांसलर जिसकी लीडरशिप थी। तो 2 चीजों से आपकी यूनिवर्सिटी बदलती है। एक है प्रशासन की सपोर्ट, जैसे चांसलर की सपोर्ट हो, गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, एजुकेशन सेक्रेटरी की सपोर्ट हो, ऐसे प्रशासन, गवर्नेंस, द ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट हो, और दूसरा आप खुद। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना भी सपोर्ट हो सरकार की, ना भी हो, आप तो है सरकार, आपके पास तो युवा है, आपके पास तो युवा शक्ति है, आपका क्या नहीं है? You are the mother and the father of thousands of students in every university. उसमें महिलाएं भी हैं। So आज हम लोग वो बात करने आए हैं कि what do we do? The subject which was you gave to me was promoting women leadership in higher education. उस एंगल से जो मैंने कुछ विचार अपने लिए आपके लिए सोचे थे वो इस प्रकार है, जो कि आपको ऑलमोस्ट रोड मैप मिला है, लेकिन here are my few suggestions and I'll go quickly point wise. देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जब तक हम विमेन को तैयार नहीं करेंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं हो सकती।
तो यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए मैसेज हर लड़की को और लड़के को कि जो हमारी आज की लीडरशिप कह रही है पूर्ण कौन करेगा? मैं रिटायरमेंट के बाद, हम रिटायर्ड लोग, हम और या आप जिनके पास हजारों स्टूडेंट्स की आपके पास यूनिवर्स है, यू हैव द होल यूनिवर्स विद यू, वी डोंट हैव द यूनिवर्स। अब तो हम आपके पहले था, वी हैव नाउ क्रॉस दैट एज, बट यू आर इन दैट एज। मैं पुडुचेरी यूनिवर्सिटी को बहुत बारी कहती थी चलो मेरे साथ पेड़ लगाओ, आपको बोलते बोलते सारे थे, एंड में 10 लोग आते थे, 12 लोग आते थे, 15 लोग आते थे। कितनी शर्म की बात है। क्यों नहीं हर पेड़, हर स्टूडेंट का मैंने पेड़ लगाना है? तो आप ये देखो लाखों की, आज 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें लाखों स्टूडेंट्स हैं। अगर लाखों स्टूडेंट्स ही एक पेड़ रोज हर साल बर्थडे वाले भी दिन लगाने लग जाए, ये देश की कोई कमी नहीं होगी पेड़ों की। लेकिन हम करते हैं क्या? श्रमदान करते हैं क्या? ये दिन मनाते हैं? और क्या ये हर स्टूडेंट को इंस्पायर करते हैं? इसकी लीडरशिप सरकार से नहीं आएगी, इसकी लीडरशिप वाइस चांसलर से ही आएगी। और वो मेन हो या वुमेन, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर विमेन लीडरशिप ये दे दे तो क्यों फिर हम 70 रहेंगे? Why would we only be 70 leaders amongst 1000 universities? Then government would want 700. प्रधानमंत्री जी कहेंगे मैं जहां जहां वाइस चांसलर मैंने देखी है, मैं ना वहां पर इतना परिवर्तन हो गया, आई वुड लाइक टू हैव मोर वुमेन। व्हाई नॉट? प्रूव इट। आज प्रूव करने का मौका मिला है, आओ मिलके प्रूव करो कि जहां जहां विमेन आई है वहां यूनिवर्सिटी बदल गई, ईमानदारी बेटर हो गई, यूथ पार्टिसिपेशन बेटर हो गई, इंस्पिरेशन बेटर हो गई, एम्पावरमेंट बेटर हो गई, आत्मनिर्भरता आ गई। व्हाई नॉट? Let's prove it. Like I've told you about this Nasik University, it's a case study by itself. और मैंने डॉक्टर मित्तल को भी बोला है जाकर देखिए, उनको एक उदाहरण बनाइए, और जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में ऐसी डेवलपमेंट हो रही है उनको उदाहरण बना के एक दूसरे को एक्सचेंज प्रोग्राम्स करिए। जाओ जाके देखो, हम भी वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हम उनको उदाहरण बनाएं ताकि दूसरे लोग आपकी यूनिवर्सिटीज़ को देखने आए। सो मैं ये कहूँगी कि पहली बात, हमको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये जो हमारी पाइपलाइन लीकेज है, ये जो पाइपलाइन लीकेज है, वो पाइपलाइन लीकेज क्या है? मैंने भी बहुत सारे कॉन्वोकेशंस देखे, लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, ऑल विमेन। डॉक्टर कुरैशी ने बताया दिस लाइन ऑफ गोल्ड मेडल्स, और ढूंढना पड़ता है लड़का कहाँ है। 2 लड़के आ गए, उनके लिए ताली बजती है। आज जब कॉन्वोकेशन होती है लड़कियों के लिए ताली नहीं बज रही, आज लड़कों के लिए ताली बज रही है। शुक्र है वो भी 2 आ गए। लेकिन वाइस चांसलर्स हम वी आर ओनली 70 आउट ऑफ 1000। या बहुत सारे प्रिंसिपल्स में हमारे अभी भी विमेन नहीं है, या हमारे पास HODs और रजिस्टर। बट द पॉइंट इज क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड आउट पाइपलाइन लीकेज। मेरे मन में क्या है, हाउ डू वी डील विद दिस पाइपलाइन लीकेज? इट्स अ पाइपलाइन बट देयर इज अ लीकेज। How many of these gold medalists, how many of these gold medalists rise up to the occasion and then reach up to right to the top? ये नहीं होता है। So friends, इसका मेरे पास एक suggestion है, I will give it to you as a homework for your conference number 2. Second problem, मेरा ख्याल है पाइपलाइन लीकेज क्यों होती है? वर्क लाइफ बैलेंस में। क्योंकि हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां गोल्ड मेडलिस्ट, एक बारी शादी हो जाए, कितनी लड़कियों ने आगे पढ़ाई जारी रखी, कितनी लोगों ने प्रोफेशन जारी रखी, कितनी लोगों ने वो रिकंसाइल करके बैठ गई। दिस अ प्रॉब्लम ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। और वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ लड़कियों को समझाने से नहीं होगा, वर्क लाइफ बैलेंस तो समझाने से होगा लड़कों को भी। तो क्या हम लड़कों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हम लड़कों को इक्वल ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑन जेंडर सैनिटाइजेशन? एक आध कोर्स, एक आध वर्कशॉप से काम नहीं चलेगा। You have to truly leave them and pass them out as sensitized human being, जहाँ दोनों समझे अब हमारा घर, हम 2 हमारे 2 वगैरह जो भी बोलो। अब तो 2 की बात नहीं, तो अब तो एक ही बहुत है। हम एक, अब हमारा एक, हम एक, हमारा एक। हमारा एक क्या? हम दोनों जने काम करते हैं, दोनों जने घर आके घर चलाते हैं, दोनों जने अपना अपना काम बांटते हैं और अपने परिवार को भी चलाते हैं, अपने बुजुर्गों भी साथ रखते हैं। सो क्वेश्चन इज वर्क लाइफ बैलेंस, and who better than women vice chancellors to encourage them on. So number 2. Third is patriarchy. You can handle these men and women, parents इनके, parents में you do PTAs, I do not know, schools do PTAs,
But if universities also do PTAs with these women and ask these women कि तुम्हें कोई रोक रहा है आगे तरक्की करने में, कोई problem आ रही तो बता. So you can also do regular counselings and PTAs as vice chancellors women. Women doing PTAs with the family members of these families will make a lot of difference. Networking नहीं है हमारी women में. हमारी women में वो जो boys clubs boys की होती है, women की नहीं है. Women अलग उनके networks नहीं बनते. जब university में हो networks बनाओ ताकि वो networking से अपनी साथियों को साथ जोड़े रहे. सिर्फ काम के लिए भी, cooperatives के लिए भी, business के लिए भी, skills development के लिए भी. So this is another area. Next point which I've researched is they have an imposter syndrome. हमारी लड़कियों में बहुत imposter syndrome क्या है? Self doubt, self belief. तो उनको पूछो एक एक लड़की से, why can't teachers do 101s with them? 101 करो बच्चों से, regularly 101. Vice Chancellor should also do regular 101. Vice Chancellor could sit in the classroom 101, listen to see what's happening. You all must be doing it. I'm just trying to see what are some of the good practices we can adopt so that we start getting the pulse. कि इनकी pulse में किस लड़की में doubt है, किस लड़की में अभी self doubt है कि मेरा आगे क्या होगा. मैं पढ़ तो रही हूँ, मैं डॉक्टर भी बन रही हूँ, यहाँ मेरी PhD भी हो रही है, मेरी इंजीनियरिंग स्किल भी हो रही है, लेकिन मैंने आगे क्या होगा मेरा. We do not know. Then there's a lot of imposter syndrome. Supporting organizational policies is another. There is no support in organizational policies. Department देखो corporate worlds में बहुत सारी organization policies absent है. A woman comes, there's no playway school, there's no creche, there's no daycare sometimes in corporate, and some of the corporates have the best daycare. So organization policies, even in universities, up universities maybe there's a teacher who has children. Do you have your playways? Do you have the nursery so that your working mother, young mother, a breastfeeding mother can bring the child? So organizational policies, even in your recruitments. Then access to resources. And then most important is, for your next visit is these areas, is research. What kind of research are we producing and making public? और एक research हमको हर साल, मेरी request है डॉक्टर मित्तल को और आपको भी सब, डॉक्टर कुठारी साहब और आपको दोनों को मुझे एक प्रार्थना है. हर साल पहले ये अपने आए कि हमारी पाइपलाइन के साथ क्या हुआ. जितने भी लड़कियां डेटा बैंक में डालें, जितनी भी लड़कियां गोल्ड मेडलिस्ट थी, जितने भी लड़के गोल्ड मेडलिस्ट थे, let's have the pipeline, have a data. It's called the alumni of the gold medalists, alumni of gold medalists, girls and boys. Let's go back 10 years. 10 साल का भी रिकॉर्ड ले लो, पिछला रिकॉर्ड ले लो, डेटा बैंक बनाओ, एक सॉफ्टवेयर बना दो, डेटा बैंक सारे जने बनाओ अपना यूनिवर्सिटी में. जितनी वाइस चांसलर्स आज बैठी हैं, कम से कम वो तो शुरू करें. पिछले 10 साल का डेटा जरूर है हमारे पास. Feed it into a data. Even start with an Excel sheet, but you can go in for a proper program and find out where is the boy and where is the girl. Let's see the difference. Let us see the difference. That's good, checking out the pipeline. What, why, and then where is the difference? And then come to the why of the difference. तुमने क्यों नहीं पढ़ाई की आगे, या तुमने काम क्यों नहीं किया और तुम आगे क्यों नहीं करी. कोई कहेगी मैं गई लेकिन मुझे एक कॉर्पोरेट सूट नहीं की. कोई कहेगी कि मैं गई लेकिन मैं क्या करूं, अब मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, एंड आई एम अ मदर नाउ, आई हैव टू लुक आफ्टर माय चिल्ड्रन. कोई कहेगा मेरा हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब था इसलिए मैं नहीं गई. आई डू नॉट नो द रीजन. डू यू नो द रीजन? आई डोंट नो. आपके लेक्चर की तैयारी करने के लिए मैंने पूरा सारा दिन कल रिसर्च की, पूरा सारा दिन रिसर्च की. माफ करना, मुझे इंडियन रिसर्च नहीं मिली, कायदे की नहीं मिली. Why should I quote Western research? Western research की कोई रेलेवेंस नहीं है. लेकिन हम लोग तो सारे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च सेंटर्स तो आप हैं. तो हम अगर इसमें भी रिसर्च नहीं निकालेंगे तो कोई विदेश से आके करेगा. We need Indian research, and we need this research. Where are our gold medalist boys and girls? And make a comparison, and then see what happened. And then we'll see why. We'll know the reason. But you and I are only guessing right now.
कि paternity होगी, corporate policies होगा, motherhood होगा. I'm only guessing, but let's clinch it. So next Vice Chancellors Conference, let's clinch it. The reasons why our gold medalists or silver medalists or bronze medalists, they are all very bright children. Silver or gold, bronze में marginal एक number का फर्क होता है. So if we can go into checking out the research, so that's my little homework, is to check the pipeline leakages by tracing, by tracking, by training, and then by traveling. That means alumni. That means when you go in for a full data and then going for it. Do you like this idea? Those of you who like the idea, raise your hand. And do we have this data? Thank you. Do we have this data? Yes or no? This is our real challenge. Whenever you want to talk about women not being given moving up, we do not know the reason. And do you mean to say research के लिए funding चाहिए? No way. You are all funding. You don't want new funding. You don't need a new project. You don't need a researcher school. You all have management schools. You all have sociology schools. You all have criminology schools. What you don't have? You have computer courses. इतना कुछ करते हुए भी हम इनकी गति शक्ति नहीं कर सकते जैसे प्रधानमंत्री जी ने सब डिपार्टमेंट्स को जोड़ा और कहा करो काम. Why is India moving so fast today? Is the Prime Minister has brought people together, departments, and said ये गति शक्ति. सब मिलके काम करो, सारे departments अपने projects को track करो. You also become gati shaktis of departments and bring them this project. And every year, next year should become a bombshell. Let us see what each university comes up. And then each university, this department, this organization can then combine it and then see the trend. And when probably we may see a different trend in Meghalaya, we may see a different trend in Northeast, we may see a different trend in rural areas, we may see a different trend in urban areas, I do not know. So we can put it under research. Can we do this, friends? Can we do this? And then one we bring it all together, we publish this. But do you know what? This is what you will empower this organization. You have evidence then. You have research, evidence-based research. And once you got evidence-based research, you will then offer it back to the ministries concerned and the government concerned. Look, our girls are being held back. We are losing these gold medalists. They are very good. They make very good members of the society. But we could have utilized them better. We are losing their potential. India will not be a 5 trillion economy unless everybody's potential is fully recognized. Not competitively, I agree with you. Not as Dr. Kothari said, not competitively, but collaboratively. हमने लड़कों को भी पीछे नहीं छोड़ना, हमने लड़कियों को भी पीछे नहीं छोड़ना, हमने दोनों को लायक बनाना है, क्योंकि जब तक दोनों लायक नहीं बनेंगे ये देश कैसे तरक्की करेगा. एक व्हील अभी तो एक ही व्हील पर चलता आया. अब हम पुरुष के व्हील पर चलते आए, फिर हम लोग चाहते हैं क्या महिला के व्हील पर चले. हम चाहते हैं दोनों व्हील्स चले, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हम किसी का बेटी है किसी का बेटा है, तो हमको दोनों को मिलके कोलैबोरेटिवली करना है. दूसरा ये कि आप वर्क लाइफ बैलेंस के लिए प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोग्राम दीजिए यूनिवर्सिटी में. लेट्स हैव अ कोर्स कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस मैनेजमेंट वेयर मेन एंड वुमेन जॉइन इन. They go to cooking, they learn cooking, cleaning, house management, child rearing together. Why is this only for women? It's for both, because home is for both. And the child needs both father and mother. So I would say work-life balances. Do you have a work-life balance course? There you are. तो मेन चीज तो आपके पास है नहीं, तो आप विमेन एजुकेशन को कैसे ले जाओगे, क्योंकि यही तो चीज उसको रोक रही है. जैसे वो मदर बनती है उसका सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि उसके लिए बच्चा उसके लिए लाइफ बन जाता है. And there's nothing wrong, because it is the mother in her then takes a priority, and she herself sacrifices everything for her. Aaj work from home is balancing, but how many do? How many are capable? So work-life balances could start. Third is, as I included the men, gendered perceptions. How are you going to counter gendered perceptions? कौन सी perceptions को आप counter करोगे? This is what research will tell you. कौन सी gendered perceptions
corporate world में, recruitment world में, appointment method में, and then of course in the political world, gendered perception is only a winning candidate we need. And as you rightly said by Dr. Qureshi, the winning candidates become more women. Out of the percentage of women who are given tickets, majority win. So these are gendered perception, but let's have evidence. We don't have evidence. You and I only talk about, इसलिए हमारी बात मानी नहीं जाती. हमारी बात नहीं कोई सुनता. पता क्यों? क्योंकि evidence based नहीं है. आप evidence को throw करो to the facts and to the government, saying this is what's happening. Then let the leadership in the government take up your causes, saying ये मेरे पास evidence है. Talk about this evidence in your workshops. इतने सारे आप बच्चों आपके पास conferences हैं, आप करो उसमें and talk about it. So gendered perceptions will emerge out of your evidence which you will get, friends. And most important, leadership courses. Dr. Kothari mentioned. Where is our leadership courses? And that's leadership not for women. It's community leadership. Train them in community leadership. Or community leadership, lecture पढ़ के नहीं आएगी, किताब पढ़ के नहीं आएगी, करने से आएगी. By doing. And community leadership means, I'll tell you two things. I would suggest two things. One suggestion is, let the senior student take a class of the junior. So that means all the gold medalists, those toppers, take a class for the juniors. That's leadership. That's communication skills. That's called confidence building. That's also called relationship building, networking. क्योंकि वो गुरु बन गए, वो teacher बन गए. So let your senior medalists who proven to be brilliant teach the younger class, and that's part of your community metrics. I do not know this is a part of the national education policy कि जो बड़ा बच्चा दूसरे को पढ़ाएगा उसको भी नंबर मिलेंगे. अगर नहीं है तो आप लगा दो, आप उसको इनाम दे दो, आप अपना बना लो. Nothing stops you from vice chancellor to create your own good practices. बड़ा बच्चा छोटे को पढ़ाए. माफ करना, एक छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ. वो एक पर्सनल उदाहरण है. मेरी संस्था है नवज्योति का मेंशन हुआ. आपको पता है कि मेरा वहाँ 10 साल का बच्चा अडल्ट लिटरेसी पढ़ाता है. 10 साल का बच्चा. आपने किसी ने देखना तो मैं आपको दिखा देती हूँ. उस प्रोग्राम का नाम है गुरुकुल. हम जितने बच्चों को पढ़ाते हैं उस संस्था में सारे के सारे गुरुकुल में आ जाते हैं. दे आर कॉल्ड नवज्योति गुरुकुल. और गुरुकुल का मॉडल क्या है? बड़ा बच्चा छोटे को पढ़ाएगा. आपको पता है 12 साल का लड़का अपनी बहन को पढ़ाता है. 12 साल का बच्चा अपना पड़ोसी को पढ़ाता है. कोई 8 बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई 7 को. बच्चों कहाँ पढ़ाता है? छत पे. कहाँ पढ़ाता है? बगीचे में. वो पढ़ाता है. क्लास में पढ़ा, जहाँ जगह नहीं है उनके पास झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ हैं. झुग्गी झोंपड़ियाँ, इतने बच्चे लायक हैं जी, वहां पर है. और वो छत पे पढ़ा रहा है, कोई बगीचे में पढ़ा रहा है, कोई अपने कमरे पढ़ा रहा है. ये मैंने 2 दिन पहले उनसे गुरुकुल का एनुअल डे मनाया था. ये 2 दिन पुरानी बात है. और एक एक बच्चा उस फिल्म में आके कहता है, मैम मैं 6 बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैम मैं 8 बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैम मैं 4 को पढ़ाता हूँ, और मैम मैं 400 रुपया कमाता हूँ. 400 रुपया, क्योंकि कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 20 रुपया दे रहा है. आई एम नॉट डूइंग इट फॉर सेल्फ प्रेज. आई एम ओनली गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट ये पॉसिबल सिर्फ आप में ही नहीं है, गरीब में भी है. गरीब बच्चे को भी जब उसको आप चार्ज कर दोगे, वो भी बच्चा. और क्या हो गया? छोटा बच्चा उसको गुरु बोल रहा है, उसको सर बोल रहा है, उसको इज्जत दे रहा है, बड़े की इज्जत कर रहा है. मूल्य सिस्टम कहाँ से किताब से पढ़ोगे? दिस इज वैल्यू सिस्टम. दिस इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. दिस इज कम्युनिटी सपोर्ट. दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी लीडरशिप. बाय डूइंग. अगर किसी ने ये एग्जाम्पल देखना है, please send me an email through Pankaj ji and I will take you to this project. I will not go with you. Go and talk to the children yourself. गरीब से गरीब बच्चा भी आज ये लीडर बन सकता है अगर गुरुकुल का मॉडल चलाए. This is called the Gurukul model. Maybe you can do the Gurukul model. See? So this is another way of confidence building. लेकिन एक और चीज है, सिर्फ पढ़ाने की नहीं है. दूसरी चीज है, लड़कियों को बता दो कि आने वाला जीवन तेरा ये आने वाला है, तो पढ़ रही है, हाँ घर चंगा मिल जाएगा क्योंकि तो पढ़ रही, पीएचडी कर रही है, मास्टर्स कर रही है, सब्जेक्ट कर रही है, घर चंगा मिल जाएगा, घर बढ़िया मिल जाएगा, अमीर घर मिल जाएगा, पढ़ा लिखा घर मिल जाएगा. लेकिन उसके बाद का जीवन को क्या करेगी तू? डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? They must see, men and women should know what married life is. Married life is a big, very complex challenge.
एंड एवरी फैमिली इज यूनिक. आप सिमिलैरिटीज नहीं कर सकते, लेकिन कॉमनैलिटीज ये हो सकती है. लड़की को बता दो कि अगर तू फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगी आदमी में तो झगड़ा होगा, और आदमी को बोल देना चाहिए खबरदार तूने जॉइंट अकाउंट में सारे पैसे इसके ले लिए. She must keep her own account, going for joint account, but you are not the master of her joint account. Secondly, you are not going to stop her from working. Where does this come? You must show them the mirror, what life is ahead. Friends, this is empowerment of women today. If you do this, you will be empowering boys and girls both. So personal care, similarly resilience, perseverance. Personal care, women don't take care of themselves. वो अपने आप को कुर्बान करती हैं. Everything else secondary, their health is secondary. They must continue. Do you do all yoga? Do you all do yoga? Do you ensure all students do yoga? Do you have a yoga class on a regular basis? If you don't, you're missing out. Time to learn yoga and get into a habit of yoga is universities. You must have the yoga hour. इतना दुनिया आज योगा कर रही है. Why am I saying boys and girls means preventive health? Yoga means you are improving your health and you are keeping disease away. Mental disease, most important is depression and stress. So stress and depression, the uncertainty and complexity is coming in the way of our girls and boys. And yoga is a therapy. It costs you. All universities have yoga teachers, don't you? Don't you have yoga departments? Yes or no? You have. Then why don't you use them? ये नहीं हमारी योगा क्लास लगती है. हाँ, कितने 50 लोग पढ़ते हैं, तो तुम्हारे स्टूडेंट तो आपके पास तो 5,000 हैं. What about 5,000? What about 5,000? एक और गलती करती हूँ, माफ करती हूँ, एक और बतानी चाहिए. आपको पता है मैक्सेसे अवार्ड मुझे क्यों मिला? क्योंकि प्रिजन में मेरे पास 10,000 कैदी थे. 10,000. उनमें से आधे अनपढ़ थे. 10,000 कैदी और आधे अनपढ़. क्यों मुझे पता चला अनपढ़? एविडेंस बेस्ड है. वो अंगूठा लगा के एंटर किया था उन्होंने. मैंने इनको रिकॉर्ड निकाला, उससे पता चल गया कि ये अनपढ़ है. अब सवाल उठता है, अगर मैंने इनको सुधारना है तो शिक्षा के बिना तो नहीं मैं कर सकती बात. मैं कितने प्रवचन दे दूंगी इनको? इनको खुद ही पढ़ना है, खुद ही दिमाग में कुछ डालना है और खुद ही समझ में आना है. प्रवचन तो सुनाएंगे, योगा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पढ़ना भी है. तो हमने फैसला कर लिया प्रिजन में 9 से 11 रोज पढ़ेंगे, सारे के सारे 10,000. अब सारे जने पूछने लगे, मैडम टीचर भी कोई नहीं, बजट भी कोई नहीं मैडम, किताबें भी नहीं, स्टेशनरी भी नहीं, और प्रिजन मैनुअल में ये भी नहीं लिखा है कि पढ़ाओ इनको. हाँ, जस्टिस कृष्ण अय्यर की जजमेंट में लिखा था मैनुअल पढ़ते. मैंने जजमेंट पढ़ी, मैंने मैनुअल को पढ़ लिया. मुझे पता मैनुअल तो ब्रिटिश मेड मैनुअल था, वो क्यों पढ़ाएंगे हमारे प्रिजनर्स को? तो कृष्ण अय्यर के जजमेंट में था, तो किसी ने करा नहीं. तो अब सवाल उठता है, हमने ये फैसला कर लिया कि तिहाड़ जेल अब जेल नहीं बोला जाएगा. तिहाड़ जेल पता नहीं इसको क्या, तिहाड़ जेल अब आश्रम कहलाएगा. जैसे मैं आपको गुरुकुल बोल रही ना, मैं अपने बच्चे गुरुकुल के, तो हमने कहा ये आश्रम बनेगा. आश्रम में बिना योगा के, शिक्षा के, सत्संग के, अच्छे अच्छे विचारों के हो सकता है? सेवा भाव में हो सकता है? नहीं हो सकता. आश्रम बनाया तो आश्रम का मतलब ये तुम आश्रम में हो, जेल में नहीं. तुम आश्रम में हो, कैदियों सुन लो मेरी बात, तुम यहाँ आश्रम में हो. अच्छा, तो 9 से 11 क्लास लगेगी. मैडम बुक्स, मैडम प्लाना. मैं कहा वो भूलो मत, घबराओ मत. कोई बजट नहीं था. लेडीज एंड जेंटलमैन, कहाँ से आया? दिल्ली के सारे स्कूलों से यूज्ड स्कूल बुक्स आई. उनको एक चिट्ठी लिखी, अपील की, सारी रद्दी में मत बेचना बुक्स को, हमें दे दो, यूज स्कूल बुक्स दे दीजिए. हर क्लास की बुक्स, बैग आए, बैग डीपीएस से भी आए, प्लान हर स्कूल से आए, सरकारी में भी आए. जिन्हों को मैसेज गया, यूज स्कूल बुक्स में स्टेशनरी भी आई, कॉपी पेंसिल भी आया खाली. ठीक है, अब हमने क्लासों के अनुसार अपने गोदाम बनाए. प्रिजनर्स को डिवाइड किया, अनपढ़, प्राइमरी, सेकेंडरी वगैरह, वो डिवाइड किया. उनसे ये नहीं पूछा तुमने जुर्म क्या किया है. मुझे पता है जुर्म क्या किया है, वो मेरा रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन मैं तुझे शर्मिंदा क्यों करूं? मैं तो तुझे स्टूडेंट बना रही हूं. तो हमने क्लासेस में डिवाइड किया. अब टीचर्स कहाँ से आएंगे जी? प्रिजनर्स पढ़े लिखे भी आते हैं ना वहां जेल में. सब पढ़े लिखों को निकाल लिया. बीए वालों इधर आओ, 12वीं वाले इधर आओ, एमए वाले इधर आओ.
अब वकील भी इधर आओ, वकील भी बहुत सारे थे, वकील भी आओ, सारे आ गए। सारे जब ले लिए तब उनको हमने बैरकों में बांटा, और ये क्लास तुम्हारी, ये क्लास तुम्हारी। तो हमने बनाई टीचर्स पंचायत। सो क्या हुआ, उनकी टीचर पंचायत होती थी। एक हमारा डिप्टी सुपरिटेंडेंट था सुनील गुप्ता, बहुत बढ़िया ऑफिसर है यहाँ का दिल्ली, उसको भी मैं मिलवा दूंगी जब चाहे दिल करे। वो उनकी पंचायत लेता था। रोज हम अगले दिन का प्लान करते थे, और इनकी क्लास लगने लगी 10,000 की। 10,000 सारे जिन्हें पढ़ते थे, किताबें भी थी, क्लासेस भी थी, टीचर भी था, स्टेशनरी भी थी। अब मुझे बताओ, मैं जाती सेक्रेटरी होम के पास कि सर या मैडम या प्लीज सो एंड सो, मैं प्रोग्राम करके, किरण बजट नहीं है, टीचर्स कहाँ से लाएंगे? नो नो, देयर इज नो बजट फॉर एजुकेशन। नो 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 किरण, व्हाट आर यू टॉकिंग, एंड डोंट कलेक्ट एवरीबडी, इट्स अ थ्रेट टू सिक्योरिटी। मेरा सेक्रेटरी होम मुझे ये बोलता, अरे इकट्ठा नहीं कर, थ्रेट है सिक्योरिटी को, इकट्ठा नहीं कर, किताबें भी नहीं है, इकट्ठा मत कर, टीचर नहीं है, इकट्ठा मत कर, इनकी एस्पिरेशन मत बढ़ा। मैंने कहा वो तो मैं करूंगी। मैंने उनसे पूछा भी नहीं, मैंने इनसे सेक्रेटरी से पूछा भी नहीं। कुरैशी साहब होते तो मेरी मदद हो जाती, लेकिन एक कुरैशी जैसी नहीं था वो, बिकॉज आई नो हिम, ही वाज वेरी ब्रॉड माइंडेड, पॉजिटिव, ड्राइविंग द चेंज, इनिशिएटिव लेने वाले। इसीलिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया अपने इलेक्शन कमीशन चीफ टाइम में। सो क्या हुआ, आई डिडंट आस्क हिम, क्यों? मेरे से पूछेंगे तो कहेंगे पढ़ लो जस्टिस कृष्णा के जजमेंट, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप चले जाना। तो जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का धमकी दे दी जिसने पूछा, जिस ब्यूरोक्रेट ने पूछा, बोला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मुझे पढ़ाना है। डू यू नो, वी डिड नॉट स्पेंड अ पेनी, एक पैसा नहीं खर्चा। और जब बहुत सारे लोग गए तो मेरा स्टाफ मले मुझे बोलता है, मैडम वो तो सारे बैग ले जा रहे हैं, और बैग कहाँ से आएंगे? मैं क्या, लंगर में कभी कोई कमी नहीं होती, ये शिक्षा का लंगर है, घबरा मत, ले जाने दे इनको, आप मांगते जाओ आते जाएंगे। बच्चे आने शुरू हो गए, कोलंबस के आए, सीजीएम के आए, पेंसिल कॉपी लेके आए, और देखते थे बच्चों को पढ़ाते, कभी बच्चों से प्रिजनर से बात करते। मैं आपको ये क्यों उदाहरण दिया, माफ करना, इसलिए उदाहरण दिया, नहीं तो शायद आप मेरे विश्वास नहीं करते कि ये संभव है। तो मैक्सेस से अवार्ड ऐसे नहीं मिलते। मैंने तो नहीं किया था अवार्ड के लिए, मैंने तो किया था, ये मेरा कर्तव्य है। मैं जेल की सुपरिटेंडेंट हूं किस लिए, आईजी? अगर मैं इनको सुधार के नहीं भेजूंगी तो मैं हूं किस लिए? आपके और मेरे काम में कोई फर्क नहीं है। आप वाइस चांसलर्स हैं और मैं इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन थी, और आप भी ऐसे कर सकते हैं। योगा सबको करा सकते हैं। आप योगा टीचर है, या जिसको योगा आता है बाहर से भी आ सकते हैं, बाहर के बहुत सारे वेट करते हैं, क्यों नहीं योगा से शुरू करें, और आप भी उसमें जाएं। आप भी अपनी ट्रैक सेट पहन के, मैं भी करूंगी, उसमें उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। Once you lead and your teachers lead, this is the yoga hour, you will see a new way of thinking coming up. Then you involve them in Shramdan, in the garden, then doing. Then you involve them in the neighborhood school, then you do it. That's called community enrollment. Community, ये है leadership. हम कहते हैं लीडरशिप मैनेजमेंट की किताब पढ़ लो, लीडरशिप आ जाएगी। मैनेजमेंट पढ़ के लीडरशिप नहीं आती जी, सेवा करके आती लीडरशिप। अपना कर्तव्य करके लीडरशिप आती है, अपना समय दे के लीडरशिप आती है, अपना त्याग दे के लीडरशिप आती है, अपने आप को तकलीफ में डाल के लीडरशिप आती, ऐसे नहीं आती। So this is what I thought I'll share with you. So मेरी रिक्वेस्ट ये है कि नेक्स्ट ईयर जब आप मिलो, आप अपनी अपनी रिसर्च लेकर आओ। और क्या रिसर्च? Where are our gold medalists, men and women, last 10 years? And what are the reasons which men kept going or men also dropped out? Women kept going or women got dropped out? What is the percentage, and what are the things we need to do in our training in our universities, in our leadership training programs? क्या करना चाहिए? Then the strategy बन जाएगी आपकी, और उसमें policy में आएगा। Then you have Dr. Kothari here, कहो ले लो पॉलिसी, जाओ प्राइम मिनिस्टर साहब पास जाओ, जाओ एजुकेशन मिनिस्टर के पास, ये लेकर जाओ पॉलिसी लाओ। Now you give them a homework. Now no more lecture from Dr. Kothari next year. No lecture. Here is a plan, डॉक्टर साहब जाओ प्रधानमंत्री जी से लेकर आओ, इनको टास्क दो, इनको होमवर्क दो कि अब आप भारत सरकार से हमें ये चीजें पॉलिसीज में लेके आओ, चाहे कॉर्पोरेट पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, कहाँ भी है।
but it should be evidence-based. And then what I would say, Dr. Mittal, as your institution, your organization, you combine all these, and this will be good random sample. मान लीजिए 20 वाइस चांसलर्स भी मिल गए, 30 भी मिल गए, that's good enough. It's a random sampling. तो आप sampling करके उसको combine करो और एक पेपर छापो. That would be a paper which will be internationally looked up, saying what's happening in India, where the medalist girls and boys, how they're being. And then you will see the pipeline. Then that means every time you meet next time jab aap milo, follow up now, as exactly what Dr. Kothari said. Follow up. हमने ये रखा था पहले follow up बताओ ये दिया गया था government में. That means your leadership will constantly work through the year. Follow up with the government. कि हमने ये पॉलिसी दी थी, what happened? That means you are asking now, हमने तो पढ़ दिया, what has government done when we gave them let them say दो चीजें और ऐड करनी है, या चीज़ें नहीं है. यहाँ they gave you come and give you an idea, what can change in your questionnaire change करो. So now means we need to make a good combined, before you disperse, please make a combined questionnaire. One common questionnaire which could go through the institution, your organization, to all vice chancellors to do it. उसमें से करते करते half भी जवाब आएंगे, and they can all be done digital, and then they can be analyzed, and then that is how you will get the study and the trends, and then suggestions, and then ideas, and then you also have one column of good practices. So please go in for one format of data, all the questions which you can all now sit down and work, because you are all more educated than I am, you're more practiced than I am, you have more experience in education than I am. I've been only a student of one class or the other, but you are constantly dedicating your life to it. Who better than you? So design your format and get this format approved. Once it's resolved that this is what we will do, so next year you will send it. Let's say 6 months time the data should come. And once 6 months, analysis should come, and the results should be all announced here. You have your own data, as very rightly said. अपना भी आप seminar कर सकते हैं, आपस में भी discussion कर सकते हैं. You can further evolve the questionnaire when you go back, but make your draft now. Draft बना के जाना, बाहर जाके अपनी classes में जाके university में उसको और improve करना, 1 महीने के बाद वापस भेजना. It's like the first draft checked. And once that draft is done, sent to you, then you start the data collection. Make an alumni of these gold medalists. Make an alumni of boys and girls. And I'm saying go deep a little. Go gold, silver medal, bronze, all three. Once you do this, boys and girls, you will see the difference. Then you will know what has made boys go on and what has made girls not go on. Once you do this, friends, we will have evidence-based deductions. And wherever you hold it next, please publish this and then share it amongst all those people. Put it on your website, share it, put it on everywhere else so that we can all read it. And I'm sure Dr. Mittal will share this paper with me, which I will also share amongst my colleagues and friends, all those who are aware. Because when we get speaking engagements like this, then I can refer to the study. At the moment, I have no reference. The very poor reference I have, which is a shame. Universities mean research. Universities means transformation. Universities mean character building. Researchers means ground leadership. Researchers means responsible citizenship as universities. This is what vice chancellors, you are not teachers, you are transformers. And as leadership, go in for transformation. Otherwise, India will not be Atmanirbhar as you wish. And unko sapna de dena कि 2050 में आपने ये independence में देखनी 50 years. 100 years. 100 years of Indian Independence Day, आपने, हम तो चले जाएंगे, आपने देखनी है. Please show the students the mirror कि आप कैसा भारत चाहते हो 2050 में. सपना दिखाओ, सपना लो, और सपने पर चलो काम करो. You are preparing yourself from 2050. Friends, that's all in your hands. Not only in the government, also in your hands. Don't wait for the government like I did not. If I'd waited, I would have left illiterate people who would have come back for crime. वो नहीं आए crime करके, झोले वाले नहीं आए फिर, जो बैग ले गए. मैंने पूछा बैग क्यों ले जा रहे हो?
बोले ताकि हम बच्चों को दिखाएं कि डैडी पढ़ के आए हैं, नहीं तो विश्वास ही नहीं करेंगे, उनको दिखाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। सो जब आप चाहते हैं तो राह मिलती है, अब चॉइस आपकी है। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Your words were inspiring to everyone present here, and we are very sure that they help us and enable us to view gender roles and responsibilities in a unique way. With this, I kindly request Dr. Pankaj Mittal to kindly felicitate Dr. Bedi with a gesture of respect. I request Honorable Chancellor Dr. S.Y. Qureshi sir to felicitate Dr. G.D. Sharma ji. I would also like to call upon Ms. Mamta Nagpal, Prabhari, Uttar Kshetra Shiksha Sanskriti, Utthan Nyas to felicitate Dr. G.D. Sharma. I would like to request Colonel Kapoor to felicitate Atul Kothari ji. I would like to request our esteemed Vice Chancellor, Dr. Sujata Shahi, to felicitate Dr. Pankaj Mittal. आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ श्रीमती शोभा पटनाकर जी, राष्ट्रीय संयोजक महिला प्रकोष्ठ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हैं और हम उनका इस महत्वपूर्ण अवसर पर स्वागत करते हैं। शोभा जी ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व के लिए अत्यधिक कार्य किया है। शोभा जी वर्तमान में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। हिंदी भोपाल के इंदौर अध्ययन केंद्र की प्रभारी हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के बोर्ड की सदस्य और महिला समन्वय की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयोजक हैं। हम आपकी उपस्थिति के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब मैं मैम को वोट ऑफ थैंक्स और अपनी मूल्यवान दृष्टिकोण को साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सम्मान्य
सम्मानीय मंच, सदन में उपस्थित न्यास के पदाधिकारी, पूरे भारतवर्ष से आई हुई कुलपति, शिक्षाविद, देश का वर्तमान और भविष्य से विद्यार्थी, आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर किरण बेदी जी, जो देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और जिनके ईमानदार व्यक्तित्व ने न केवल प्रशासन में महिला की भागीदारी सुनिश्चित की, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मगौरव को बढ़ाने का कार्य भी किया। ऐसे अतिथि का हम बहुत बहुत हृदय से आभार मानते हैं। और आपने जो अपने जीवन में चुनौतीपूर्ण कार्य किए, उसके बारे में जो बताया और प्रशासन और कुलपतियों का सहयोग लिया, जीवन में असंभव और असामान्य ऐसे परिवर्तन लाए। साथ में पुडुचेरी में जो जल ही जीवन हम कहते हैं, उसको वास्तविकता में बदला है। 1 लाख पौधे का जो चैलेंज दिया है, मैं इंदौर से हूँ इसलिए बताती हूँ, आज इंदौर में 1 लाख पौधों का रोपण हो रहा है। वहाँ के महापौर ने सभी को आह्वान किया है और शिक्षा क्षेत्र से लेकर सामान्य लोग अपने घरों में बाहर वगैरह ये सब कर रहे हैं। 5T की बात की है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात की है। इनका ये जो प्रेरक उद्बोधन है और आपने जो उनको विश्वास दिलाया है कि आप उसका अनुसरण करेंगे और परिवर्तन लाएंगे, ऐसा जो विश्वास उनको दिया है, बहुत बहुत हृदय से आभार। हमारे आज के अध्यक्ष प्रोफेसर गौरी दत्त शर्मा जी, आप भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष हैं और साथ में आपने बहुत सारी जो बातें यहाँ कही और ये कहा उदाहरणों के साथ, जिन विश्वविद्यालयों में महिला कुलपति बनी है प्रथम बार, उसमें किस तरह से सकारात्मक परिवर्तन आया है, वहाँ गुणों के गुण बढ़े हैं और योग्यता भी बढ़ी है। साथ में मेघालय के बारे में भी बताया कि 77% महिलाएं वर्कर्स वहाँ है और छात्राओं की संख्या भी अधिक है। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार मानती हूँ। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा, इस ध्येय वाक्य के साथ शिक्षा जगत की विकृतियों को दूर करने हेतु सतत प्रयासरत और संपूर्ण देश में न्यास कार्य को गति प्रदान करने वाले न्यास के राष्ट्रीय सचिव माननीय डॉक्टर अतुल कोठारी के कुशल मार्गदर्शन हेतु मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और प्रत्येक उन्होंने जो न्यास के द्वारा देश भर में कई विषयों पर जो सेमिनार किए हैं और क्या हो सकते हैं आगामी योजना के बारे में भी उन्होंने यहाँ सुझाव दिया है। भारतीय IILM विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुजाता जी शाही एवं चांसलर और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी जी के संबोधन मार्गदर्शन ने हमें बहुत सारी बातें बताई। माननीय कुरैशी जी ने तो अपने जीवन में जो जो कुछ किया है, कितना वास्ट उसका कैनवास है, इसके बारे में भी बताया। आंकड़ों के द्वारा महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया है। यह सब जानकारी जो उन्होंने दी, आपके सहयोग के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ की महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव, हमारी साथी डॉक्टर पंकज मित्तल, उन्होंने भी डाटा के द्वारा महिलाओं की स्थिति के बारे में और आगामी योजना के बारे में भी बताया है। और ये जो आयोजन उन्होंने किया है, ये जो शुरुआत की है, यह बहुत बड़ा माइलस्टोन बनने वाली है। इसके लिए भी मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। ये सब व्यवस्थाएं जो की है यहाँ की कुलपति सुजाता जी शाही, जिनके कारण यह आज संभव हो रहा है कार्यक्रम, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत उनके आभारी हूँ। इसमें सहयोगी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के जो भी कर्मचारी हो या अन्य लोग, गणमान्य नागरिक, उनके सहयोग के लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। Thank you, Madam. I would like to request our Honorable Vice Chancellor, Dr. Sujata Shahi, to felicitate Shobha ji.
I request all dignitaries on the dais to join us for a group photograph. Pair. Is it possible to move it? Possibly. We try. Your best.